मीटर हाइट है भाई जी? 3500 मीटर हाइट पे बच्चे। 3500 मीटर हाइट पे मूंग दाल का हलवा। तो टेंट हमारे लग चुके हैं। कैंप साइट इज ऑलमोस्ट रेडी। ऑल थ्री ऑफ देम हैव गॉन टू कलेक्ट सम वुड। तो जैसे ही वो लकड़ी लेके आ जाते हैं, विल सेट अप अ कैंप फायर एंड गेट टू कुकिंग। वी ऑल आर हंग्री, सो एंड इट्स ब्यूटीफुल। वहाँ कुछ घोड़े भी हैं और कुछ गुजरों के डेरे भी। So we are not alone here, we have company. तो आ गए ये लकड़ी लेके भी। Now we'll get to cooking. He's Yogesh, you know him. Nice. So like I told you, यहाँ पे पहले ही किसी ने आग जलाई हुई है। The land is quite dry. यहीं पे हम भी आग जलाएंगे। दिखा दो भैया। हमने बस तेरी तो चाय हमने चढ़ा दी है, कोयले अभी पकी रहे हैं। ढक्कन दे। एंड वी आर ऑन इट। डन। Good morning from Asurbag. And we have baked this apple. मैं दूध पी नहीं रही तो मैं क्यों खाऊं? दूध के साथ ही दूध वाली आइटम है ना ये। थोड़ा जल्दी निकाल दिया तुझे। ओह वाह। क्या कहेंगे? थोड़ा और पकाऊंगा वैसे ना। कुक हो गया। कैसा है हर्षल? अच्छा लग रहा है। क्या चीज खाई है मैंने ऐसी? हाँ मुझे भी उसका नाम नहीं है। आमला, आमला नहीं होता? मुरब्बा। मुरब्बा। हाँ मुरब्बा। These are some local boys who have just joined us for a game of cricket.
तो इन्होंने प्लान किया है कि दे विल स्पेंड द नाइट विद अस एंड नाउ वी आर मेकिंग ए शेल्टर. This is going to be our ridge pole. नहीं और नहीं कर जाता नहीं और मां फट जानी बहुत झाड़ी है ना भाई का मैं तेरे तुम्हारा पेट सब चीड़ बंद नहीं रहता नहीं भाई ये वो कट में. और ये हमारा बुशक्राफ्ट शेल्टर भी ऑलमोस्ट रेडी है. ये फोम मैट हमने गुज्जरों से ली है और अंदर से इट्स प्रीटी डिसेंट, लुक्स गुड. So इन्होंने वाली का केस पे it is done. चलता रहेगा पूरी रात. ये 2 पैक दो. अरे And like this, मजे ले रहे we talk the night away, only to wake up next morning and do the ritual of going to the actual pass. हाथ खाली रखने नहीं चाहिए. पीछे देखियो किसी को लगा मत दियो. चलो. So guys, हमारी 2 दिन की कैंपिंग ट्रिप खत्म हो चुकी है. So what do you want to say now? अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी. आग जलाना सबसे बड़ी. कैंप लगाना, Very important. कैंप लगाना, टेंट लगाना और शेल्टर बनाना. हाँ, इस बार हमने कुछ नया किया, वो था शेल्टर बनाना. हमने शेल्टर बनाया इससे, पत्तों का. वो भी पत्तों से. वो भी तो कैसा लगा आपको नेचुरल शेल्टर में सो के एक रात पूरी? भाई जी अच्छा तो लगा, लेकिन रात को थोड़ी सी अपनी ना हालत टाइट हो गई. फिर आपको अंदर आना पड़ा. 1 बजे प्लान करा कि अपने को कुछ दूसरा करना चाहिए, नहीं तो हम सवेरे उठ नहीं पाएंगे. ज़्यादा लंबी नहीं हो जाएगी. ये जा रहे हैं हम जोगनी माता के. माता खाना खाते गुस्सा हो जाती थी. प्रसाद लेके यहाँ जाना चाहिए था नंगे पैरियों में. चाहे यही से चल दो. हाँ अरे जूता टेंट में नहीं, स्लीपिंग बैग में आते. ना टेंट पे भी दिखा तो टेंट. We are almost there. ये रास्ता सीधा ही पाकिस्तान. That was our campsite. वो है गुज्जरों का डेरा. And this is Bashleo Pass. कितने मीटर हाइट है भाई जी? 3500 मीटर हाइट पे. 3500 मीटर हाइट पे मूंग दाल का हलवा. जोगनी माता के लिए प्रसाद. चलो नीचे.
चल मैं ये कैन लेकर घूम रही हूँ चल चुपचाप So we are done with this campsite. This is called Asurbag. और ये हमने एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया था जो कल इसमें 2-3 जन सोए सुबह 2-2:30 बजे तक फिर वो टेंट के अंदर आ गए. It was really cold. But still ये एक decent natural shelter है सर्वाइवल सिचुएशन में जो is good enough. So guys, that is it from Bashleo Pass. We're leaving now. I hope this was a journey good enough for you. मैंने ज़्यादा कैप्चर तो नहीं किया बट the moments that I have compiled here are the highlights of our 2-day camping at Bashleo Pass. So see you guys. Stay tuned for more videos and subscribe if you are new, if you enjoyed this travelogue. Goodbye.